जय जगन्नाथ आपन को बहुत बहुत स्वागत अछि आजिर सेशन रे आई एम रियली हैप्पी टू वेलकम यू टुडे आजिर सेशन गोटे बहुत इंपोर्टेंट सेशन आउ ए सेशन रे मो बहुत इंपोर्टेंट जिंस आपन को सहित डिस्कस करबी देखंतु इट्स एक्चुअली आई हैव मेंशनड इन द थंबनेल दैट इज ऑल टेंसेस देखंतु काहे कि ए पर्टिकुलर टॉपिक टा मु नेली जस्ट फॉर एन एग्जांपल मु आपन संगे कथा होची मु एबे कथा होची मु काली कथा हेइथिली मु कथा हेबार 2 घंटा हेलानी राइट पर्टिकुलरली एई एक्शन रे केते गुडा को सेंटेंसेस हमें करि दउछे किंतु प्रैक्टिकली हमर कोन होची प्रैक्टिकली हमर एक्चुअली if you talk about the tenses basically we know that there are three kinds of tenses: present, past and future. Present, past and future. हाँ मु कथा होची मु कथा हेइथिली मु कथा हेबी that is a general understanding right that is a general understanding किंतु जेते बेले हमर sentences आसे जेंति कि I have spoken to her I have been speaking to her for 2 hours so एई भले जेते sentences आसे हमर confusion काहे कि हुए केतेबेले पास्ट परफेक्ट लागला केतेबेले प्रेजेंट परफेक्ट लागला केतेबेले पास्ट सिंपल लागला केतेबेले फ्यूचर कंटीन्यूअस लागला ए जो जिंस गुड़िक आमर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करे बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करे आ मु चाहूची जे आजर ए सेशन आपण अटेंटिवली अटेंड करंतु जहा द्वारा जो आपनकर डाउट अछि टेंसेस ऊपर संपूर्ण भाबरे क्लियर करंतु आ तापरे आपण देखिबे केते स्ट्रांग आपनकर फंडामेंटल्स कांसेप्ट्स रहउची टेंसेस को नेकी and believe me if you are clear with tenses most of the portions of grammar and English is almost done. More than 50% is done. The person who is totally clear with tenses, he has the strongest hold on tenses, on making sentences. So make up your mind and stay until the end of the video so that you get the total clarity on different kinds of tenses. And believe me, by the end of the session, you would not have any doubts about any tenses. So if you're ready, let's start. Okay, देखो तो first जहाँ मु कहिली आपनको जे ଆମର tenses basically are of three categories, right? Are of three kinds. Those are present, past and future. Present, past and future. एक तीनटा category रे ଆମର tenses are generally categorized. Okay? किंतु ଆମର confusion हेबार कारण कोन? आउ एबे कोनसी प्रकार confusion हबनी. देखंतु फर्स्ट आमे ए तीनटा कैटेगरी रे हमर टेंसेस गुडिको डिवाइड कर देले ओके एबे देखंतु हमर एटुकु बहुत इंपोर्टेंट एटुकु हमकु देखियार अछि देखंतु एटा होची सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एते की चारिटी पर्टिकुलर हमर कैटेगरी रे सब जक टेंसेस डिवाइड हे जाई छी ओके पर्टिकुलरली चारिटा कैटेगरी रे सब जक टेंसेस डिवाइड हे जाई छी सेही लागि हमर टेंसेस को नेकी बहुत सारा कंफ्यूजन हुए किंतु एमती देखियो बोले केते टेंसेस हला आपनकर 4 4 अब 3 4 12 sentences 4 3 12 12 टोटली देयर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस अब सेटा होची आपनको कोनती टेंस चार्ट राइट टेंस चार्ट so how many tenses we have basically there are 12 kinds of tenses okay so let's understand everything step by step okay first one present simple tense से कौन लिखी I write so present simple tense okay present simple tense what is the definition of present simple tense if you have a pen and paper please make a note of it we use present simple tense for the actions which happens on a regular basis. For regular habits, we use present simple tense. Or for universal truths, we use present simple tense. That definition, right? The definition clear hai na? J, we use present simple tense for the actions which happens on a regular basis. Jemti ki, I go to school at 10 a.m. Okay? I go to school every day at 10 a.m. I go to school at 10 a.m. So एटा जो रेगुलर हैबिट हैला सेटा होची हमर प्रेजेंट सिंपल टेंस
I go to school, I go to office, I cook dinner at night, I get ready for office. Jota ki amar day to day activities re, it's a very important part of tenses. Okay, present simple tense. Seita ko ame कौन से प्रकार confusion रखिबानी. गोटे स्टैंडर्ड आपनको गोटे सेंटेंस दे दोची सेटा होची the sun rises in the east. Present simple tense माने आमे बुझु जे the sun rises in the east. जोटा सबु बेले होची. That is a present simple tense. The नारे कौन सी प्रकार confusion रखिबिनी, it's called present simple tense. Okay, सेटा हेला हमर present simple tense. आपण ता ना जानिले ता डेफिनेशन जानले आ गोटे स्टैंडर्ड आपण जानिले जे तार गोटे हमर the sun rises in the east, right? एटा हम स्टैंडर्ड गोटे हमर एग्जांपल सेंटेंस जानिले एथरे कौन सी कंफ्यूजन रखिबेनी, राइट? द सन राइजेस इन द ईस्ट हेला एटा हेला हमर प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस. Okay, over. So basically we use present simple tense for the actions which happens on a regular basis. Okay, that is the end of present simple tense. Okay, अब देखो तो ए जो टेंसेस आपनकर थरे बुझी देला परे आपनकर जो आमे सेंटेंसेस करिबा ना आपण आइडेंटिफाई करबा को स्टार्ट करिवे जे अरे ए सेंटेंस ता ए टेंस को बिलोंग करछि, ए सेंटेंस पे हमें ए टेंस यूज करबा आपनकर टोटली क्लैरिटी आसी जिवो. फर्स्ट अपन क्लैरिफाई हुअंतु को टेंस कहा पे यूज होछि, तार रूल्स कोन, तार केमिति, तार पैटर्न ता कोन, तार डेफिनेशन कोन, सब धीरे धीरे अपन को पूरा पूरी बुझी हे जिवो. ओके, ऑलराइट. तापरे हमर आछि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. जेंते कि मु कहली आई एम टॉकिंग टू यू, राइट? आई एम टॉकिंग टू यू, right? So we use present continuous tense for the actions which are happening at the time of speaking. We use present continuous tense for the actions which happens at the time of speaking. I am speaking to you. I am cooking now. I am going to the market. He is busy now. He is working now. Okay. At the moment he is writing his project. So हम generally जो काम हुए at the time of speaking, for that we use present continuous tense. Okay, that is present continuous tense. Generally हमारा present continuous tense रे हमारा लगे time expressions, right? जेमते कि हमारा होची now, okay, at the moment रहिला, currently रहिला, right? ए सब जिंस हमको एक्चुअली बताए जे हमें एटा present continuous tense टा यूज करूचे. What is the name of the tense? Present continuous tense. And how and when do we use it? We use present continuous tense for the actions which happens at the time of speaking. At the time of speaking, je ghotanati hochi, right? So for that we use present continuous tense. All right. Okay, if present continuous tense है, present continuous generally is very easy. Everybody can understand it. ଆମର मेनली एक्चुअली तार हमर कंफ्यूजन होय जते बळे हम इज एम आर उडी को भूल कर दो, सेइथरे हमें भूल करबानी. इज एम आर, आई राइटिंग, आई कुकिंग, दे गोइंग, सेमती केबे करबेनी. हम सब बळे इज एम आर फॉलो करिवे आ सेंटेंस को कंप्लीट करिवे. किंतु आपण सबटू इंपोर्टेंट जिंस बुझिबा जे केते बेले हमें को टेंस यूज करूछे. So if you have the clarity that we are using present continuous tense for the actions which happens at the time of speaking, then at least you know which kind of tense I am using now. Okay, clear? All right. Now let's go to present perfect tense. Present perfect tense. Okay. Present perfect tense is one of the tenses which is mostly used. Generally ame जो sentence गुड़ा को कहूँ कहूची मु ताको देइची, मु खाइची, मु ताको लेखि देइची, जो एई भलिया जो सेंटेंसेस गुडी को करूची सेतरी जनरली हमरो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूची. Now what is the definition of present perfect tense? We use present perfect tense for the actions which happened in the past but has still some connection in the present. We use present perfect tense for the actions which happened in the past but has some connection in the present. ता माने past जो actions टा हमर start हेची किंतु has a link to the present.
has a link to the present. Say kshetra re amar use haba present perfect tense. Jemti ki I have written a letter to my father. I have eaten my food. I have spoken to my manager. All right. She has gone to the market. Say market jaichi. Right. So for that we use present perfect tense. Okay. Present perfect tense. I have spoken to my manager. Right? I have spoken to my manager. एटा हैला present perfect tense. अब present perfect tense रे हमर actually pattern टा कोन? Pattern टा कोन देखो pattern टा होची I, we, you, और they. Right? They रे हमर have plus V3 लागिबो. V3 लागिबो. जेमति कि I have spoken to my manager. I have written a letter. I have cooked the food. Right? I have gone there. Right? ଆମର B3 ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମର perfect ଆସୁଛି ଜିନିଷଟା ଆମର actually simple ରେ କି continuous ରେ ଆମର ଏତେ confusion ହୁଏନି. Generally verb ର form ଟା ବିଶେଷ change ହୁଏନି. I write, I am writing. Right? କିନ୍ତୁ ଆମର complication start ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ perfect କୁ ଯାଉ, perfect tense କୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ B3 is coming into the picture. V2 ଟା generally ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ସେଟା past tense ଯେମିତି କି I wrote a letter. I did that work. I cooked food. କିନ୍ତୁ ଆମର B3 ଆସେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ skip କରିଯାଉ. କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆମର B3 ଟା ୟୁଜ ହୁଏ perfect tense ରେ ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର confusion ହବ ନାହିଁ. ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା pattern I, we, you, they plus have plus B3 କିନ୍ତୁ he, she ଆଉ ଏଥିରେ has use ହବ plus B3. She has gone to the market. Right? But they have gone to the market. Right? He has cooked food or he has cleaned the room. Right? He has called to his father. तो हमारा इधर V3 लगुचे जेतेबेले हमारा present perfect tense यूज करूचे. बस सेति की जिंस अपन मन रखिया अछि आ मन रखिया अछि जे tense रो ना कोन present perfect tense काहे कि ना से जिंसटा हमर past start हिची किंतु it has got a link with the present. So that for that we use present perfect tense. Okay, एतर कोनोसी confusion रखिबे. The definition मन रखले, the pattern मन रखले आ the नाट मन रखले. एते कि तीनटा जिंस जदी आपण क्लियर अछंती तबे कोनोसी प्रॉब्लम हबो नै. Okay, now एते हमें जिबा present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. देखो तो मुझे तोरा कहले present perfect tense होची जोडा कि the action which happened in the past and has a connection to the present. Similarly, our present perfect continuous रे the action which happened in the past and has a connection but it was going on. It did not get over. It was going on. See for example, I have been writing. I present perfect continuous. Okay? Thinking I have been reading or I have been studying for 2 hours now. Right? I have been studying for 2 hours now. एथरे कोन होची हमर I have been studying. एथरे हमर पैटर्न टा कोन हैला हमर गोटे ड्यूरेशन हमें बतेलु मु 2 घंटा हेलानी पढुची. मु 2 घंटा हेलानी पढुची. ता माने कोन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट एंड it is still continuing. Right? जेहेतु पास्ट एते लिंक अछि सेही लागि हम परफेक्ट रहला आ एटा कंटीन्यूअस रहला. आ तो पैटर्न टा कोन I, we, you, they plus have plus be plus bing. Right? I, we, you, they plus have. I have been reading or they have been working hard for 2 hours now, for the whole day now. Right? But he, she, it, they, amo has lagla plus been lagla plus bing. She has been speaking to his friend for 3 hours now. She has been speaking to her friend for 3 hours now. Now, what is the name of the tense? Present perfect continuous. Seithire amara been is coming into the picture. The pattern ta hi seta.
हमर बीन न लगेले हमें से सेंटेंस टी बनै परिबा नाही. All right, if you're still with me and if you can really relate what I'm saying, please give me a like and do subscribe and mention new if you're new to the channel. All right, okay, so एइथरे हमर एक्चुअली गोटे जिंस आपण माने क्लियर केयरफुल रहिबे जोटे कि हमर होची ही शी इट रे हमर हैज लागबे. ओके, आपण एइथरे कोनसी प्रकार भूल करिबेनी. हमर ही शी इट आर द स्पेशल प्रोनाउंस. ही शी इट आर द स्पेशल प्रोनाउंस. सेथरे सबुळे हैज लगबे नले एस केबे भी भूलिबेनी. जेंति कि he goes to work, she goes to the market, but I go to the market, you go to the market, they go to the market, we go to the market. तेणु स्पेशली he she it pronoun रे हम एथरे particularly careful रहिबा. All right, okay, so present perfect continuous tense ता हमर क्लियर रहला. ओके, हमर चारिटा टेंस पूरा पूरी क्लियर हैला. अदा ना आपण माने मने रखिले, राइट. त ना गुडी को आपण मने रखिले, ता डेफिनेशन जानिले, तार पैटर्न जानिले. ना डेफिनेशन और पैटर्न एति कि जदी आपण क्लियर अछंती ना आपनकर टेंसेस को नेकी केबे डाउट होबनी. ऑलराइट, टेंसेस को नेकी डाउट होबनी. ऑलराइट, सो विथ दिस लेट्स गो टू पास्ट टेंस. नाउ पास्ट सिंपल टेंस प्रथम कोन देखिए. पास्ट सिंपल टेंस ए चार्ट जेंति मु बनै छी आपण जदी फॉलो करूछंती ए चार्ट एग्जैक्टली बनांतु और सेमिति ही लेखन देखन आपण कोनसी कंफ्यूजन रहबनी. आपण कोनसी भी कंफ्यूजन रहबनी. देखो तो ଗୋଟେ सिंपल जिंस इफ यू आर रियली गुड एट मैथ्स ना then you can also be good at grammar. Both the things are almost the same. Okay, see आपण जदी एई बळे पैटर्न रे लेखिबे जानिबे जे एटा टेंसेस रहिला आपण कोनसी प्रकार कंफ्यूजन रहबनी. Okay, so let's go to past tense. Now past simple tense. What is past simple tense? Past simple tense आमे ता नाटा लेखिबा. Okay, the नाटा मने रखियो बहुत important so that you are clear that I'm using that particular tense. Now past simple tense, why do we use it? How do we use it? We use past simple tense for the actions which happened in the past and got over. Okay, we use past simple tense for the actions which happened in the past and got over. I spoke to my manager. I did that work. I wrote a letter. माने से जिनसटा कंप्लीट हे साइछि. सेटा हाफ टन नो कि अधारु इंटरप्ट हेनी. सेटा कंप्लीट हे साइछि. ऑलराइट, सो आई wrote a letter. मम लेखि सारिछि. I cooked food. ऑलराइट, एटा हला हमर पास्ट सिंपल टेंस जोतरे हमर कोनटा आछि हमर V2 आसुछि. ऑलराइट, सेतरे हमर सब प्रोनाउन पे हमर V2 आसीबो. I, we, you, they, he, she, it रे plus V2. Alright, I wrote a letter. I cooked food. Okay, I wrote letter. I cooked food. I spoke to my manager. They spoke to their colleague. Okay, we went to the market. Alright, so we are using V2. Alright, the second part of the verb V2. Alright, so एथरे हमरो रहला past simple tense. Okay, एथरे आपनकर क्लैरिटी रहि जिबा कथा जे हमरो टेंस रो ना कोन. Tense होजी past simple tense. What is the name of the tense? Past simple tense. And when do we use the definition कोन? We use past simple tense for the actions which happened in the past and got completed, got over. That's all. That छोड़ा और अधिक किछि नै past simple tense. तार डेफिनेशन आउ तार पैटर्न कोन? तार पैटर्न होची I, we, you, they plus V2. V2, right? Wrote, written, cooked, 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 called, called, speak, spoke, spoken. तो हमारा second part होची, second form of the verb. Okay, clear? एटा होची आपनकर past simple tense. All right, now let's go to past perfect tense. Past perfect tense. Now past perfect tense. Now past perfect tense को नहीं कि लोग को बहुत डाउट थाए काई ना इते एक्चुअली डाउट होकर कारण कोन कि से माने भाबंती इते जो हैड अछि ना ए हैड दे टेक इट फॉर ग्रांटेड. हैड तो हमें माने पास्ट टेंस माने जे कोन से पास्ट टेंस यूज करि परिबे से भले डाउट आपण रखिबेनी कि आपण कंफर्म न है कि हैड को यूज करिबेनी.
कहीं ना एतिकी बुझी दबा दरकार पास्ट रो केतला कैटेगरी रही पास्ट सिंपल टेंस अछि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अछि पास्ट परफेक्ट टेंस अछि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अछि ऑलराइट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अछि तेनो एटा होची आपनकर पास्ट परफेक्ट टेंस जोटा रे हमरो हैड इज कमिंग इनटू द पिक्चर राइट आमे पास्ट परफेक्ट टेंस रे केते बेले हैड लगेबा एंड दैट को बुझिबा आगरु हमकु बुझिबा दरकार जे पास्ट परफेक्ट टेंस लागिबो केते बेले हमर पास्ट परफेक्ट टेंस लागिबो केवल सेही बेले सिचुएशन रे जेते बेले दीटा सिचुएशन अछि देखंतु हमर पास्ट परफेक्ट टेंस लागिबो जेते बेले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट two works there are two works in the past which had happened the former one will take the past perfect tense dita action past रे हेची जो first action टा होची सेही लगी हमर past perfect tense लगी past perfect tense लगी just for an example देखो तो it is example कौन होची I had written I had eaten before he came I had eaten before he came माने एथरे दीटा action हेची से खाइबाटा हेची आ जणे आसीबाटा हेची I had eaten before he came से खाए मु खाई सारी थिली से आसीबा आगरु मु खाई सारी थिली से आसीबा आगरु मु खाई सारी थिली तो दीटा एक्शन हमरो हैला पास्ट रे किंतु हमर कंफ्यूजन हबो केमती जत्ते बेले हमें भाबिबा कि अरे दीटा एक्शन रे मु को टेंस लगेबी दीटा को पास्ट सिंपल लगेबी नाही से आसीबा आगरु मु खाई सारी थिली माने फास्ट एक्शन जोटा खाई सारी थिली सेथिरे हमरा पास्ट परफेक्ट टेंस लागेबो आई हैड ईटन बिफोर ही केम ओके आई हैड ईटन बिफोर ही केम तेणु जो फर्स्ट एक्शन रहइबो सेथिरे हमरा पास्ट परफेक्ट टेंस लागिबो तो हमरा पैटर्न टा कोन पास्ट परफेक्ट रो एटा रहला आपन सेंटेंस आई हैड ईटन before he came I had eaten before he came I we you they I we you they he she it plus had plus we3 I had eaten before he came आम सेते बेले ही हमर पास्ट परफेक्ट इज कमिंग इनटू द पिक्चर आउ आमे v3 लगेबा जेतोडा परफेक्ट टेंस ओके पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर ऑलराइट सेते बेले दीट एक्शन इज कमिंग इनटू द पिक्चर एंड द फर्स्ट एक्शन वुड टेक पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलराइट एटा हैला हमर पास्ट परफेक्ट टेंस ता छोडा हमर हैड हमर लगेबा नाही ओके ता आगुरु हमर थिला पास्ट कंटीन्यूअस टेंस राइट लेट्स touch upon that what is past continuous tense then past continuous tense ta kon past continuous tense is a very simple kind of tense which actually is used for the action which happened in the past and was going on did not get over was going on right see for that is past continuous tense tar now gudi ko kebe te apna miss karibani past continuous tense right see for example I was watching TV at 3 p.m. Alright, I was watching TV. माने जो कामटा मु past करूथिली. It did not get over. Right? It did not get over. They were playing outside. Right? They were playing outside in the evening. Okay? in the evening हमर टाइम एक्सप्रेशन टा बहुत इंपोर्टेंट जेतोले हम टेंस को आइडेंटिफाई करिया को जाउछु टाइम एक्सप्रेशन ताकू केबे भी मिस करिवेनी ऑलराइट जेते बेले आपण सेंटेंस से भी करूछंती तार टाइम को एक्सप्रेशन ता टाइम को एक्सप्रेस करिया बहुत इंपोर्टेंट सेटा भूलिबेनी ऑलराइट दे वर प्लेइंग आउटसाइड इन द इवनिंग तो सेटा हमर कोन होची पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ऑलराइट वी यूज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस for the actions which happened in the past and was going on. That is the definition. And what is the pattern? The pattern is for all amara jetaka achi pronoun I, we, you, they,
रे हमरो लागिवो I we you they he she it. All right, तो नहीं कि हमरो was he were plus the ing. They were watching, I was watching, I was talking. All right, एटा हैला आपनकर past continuous tense. Okay, so past perfect tense done, past simple tense done, past continuous tense. Now let's go to past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. मुझे example टा आपन को देली जोटा कि past perfect tense रा I had eaten before he came. So एटार I had eaten माने मु खाई सारी से आसीबा आगु मु खाई सारी थिली ताहाले से कामटा मु खाइबा कामटा सरी जाई थिला राइट सेही थिला कि मु past perfect tense लगेली किंतु जदी एई भले होची जे I had been reading for 2 hours before he came. I had been eating for 10 minutes before he came. मु खाइबार 2 घंटा होउथिला जेतबे से आसीला सेमती ए एग्जांपल अछि I had been reading for 2 hours before he came माने मु पढिबाटा चालू थिला राइट मु पढिबाटा सॉरी नथिला I had been reading for 2 hours before he came. तो हमें past perfect continuous tense को क्षेत्र लगेबा we use past perfect continuous for the actions which happened in the past and it was going on. अपन तो present perfect tense रो past form टा होची past perfect continuous right एथरा हमर पैटर्न टा कोन past perfect continuous रे past perfect continuous रो पैटर्न टा कोन होची I we you आओ they he she आओ it they हमरा plus had plus been had been I had been reading for 2 hours before he came. Okay, clear? I had been reading, so that is past perfect continuous. हमरा 8 tense already cover ହେଇगलानी 8 tense already cover ହେଇगलानी ଆଉ चारटा ରହିला जो थ्रू हमरा most important ones are most these top 2 are most important, last 2 are just for your awareness, you should know. Okay, so let's go to future tense. Now future tense तो हम समझ जानछु जो थ्रू कि will लागिबो right जेमति कि I will write, so simple future tense I will write. Now simple future continuous I will be eating at 8 p.m. I will be eating at 8 p.m. माने मु खाइबी I will be eating खाउथिबी मु खाउथिबी माने जो घटनाटा आपण श्योर अछंती हेतरे हमर ing लागुची हमर रोची प्रेजेंट कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस I will be eating at 8 p.m. ऑलराइट सेही क्षेत्र रे हमर will plus ing हमें लगाउछु I will be eating तापरे फ्यूचर perfect tense अछि I will have finished my work by 5 p.m. I will have finished my work by 5 p.m. Actually ए घटनाटा हुए केते बेले ए जो पर्टिकुलर सेंटेंस हमें बनाऊ केते बेले जेते बेले हमें फ्यूचर रे गोटे इमेजिनेशन करदो सपोज आपण दे जण सांग कथा होचंती आ से माने डिस्कशन करूचंती जे अरे तू राते 5टा सुधा कोन संध्या 5टा सुधा कोन तो कामटा सरी जाइतिबो हाँ मोर प्रोजेक्ट 5टा सुधा हेई जाई थिबो I will have finished my project by 5 p.m. हाँ सेते बड़ो मो कामटा हेई जाई थिबो I will have finished my work by 5 p.m. सेते बड़ो मो कामटा हेई सारी थिबो सेते बेले हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाउछु. Hi Indra Priyadarshini, I'm really happy to see you. Thanks for joining. I've changed my time and thanks for coming now and I would continue this timing, so stick to this timings. Alright, so the eta hela past amara future perfect tense I will have finished my work by 5 p.m. Alright, I will have finished my work by 5 p.m. Alright, eta hela amara perfect tense, right? एते हमरो कोन रहउची अगेन आपण देखुचंती हैव लागिबो जेमति कि I will you रे हैव लागिबो ऑलराइट फ्यूचर परफेक्ट रे परफेक्ट माने हमरो स्पेशली फ्यूचर परफेक्ट माने हमरो ये होची कंफ्यूजन होची हमर प्रोनाउन रे ही शी इट रे हमरो हैज लागिबो राइट हैज प्लस be3 बाकी I we you और they रे हमरो हैव
plus V3 ଲାଗିବ okay I will have finished my work they will have finished their work right but he would have finished his work by 5 p.m. alright एटा हैला हमर पैटर्न I will have finished एतरे हमर होची V3 लागबो ओके तो हमर एक्चुअली डेफिनेशन ना कोन आमे जते बेले we use future perfect tense for the actions which would be done in the future for a particular time at a particular time so sette belku hei jai thibo that for that we use present future perfect tense okay future perfect tense okay now ଏବେ ଆସୁଛି future perfect continuous ଯେମିତି କି ଆମର ରହିଲା for example ହଉଛି I will have been working for 2 years in this company I will have been working where how is this sentence formed तू सेतेबेले तू 2 वर्ष पर तू कोन करथु रे मु एई कंपनी रे काम करिवार 2 वर्ष हेई जाइथिबो मु एई कंपनी रे काम करिवार 2 वर्ष हेई जाइथिबो ता माने मु काम करूची आ करूथिबी माने कंटिन्यू थिबो सेतेबेले मु पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाउची फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगाउची I will have been working for 2 years in this company I will have been working for 2 years in this company right एटा होची फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आमे 12टी टेंसेस बुझी देलु भलो की बुझी देलु राइट भलो की बुझी देलु आ जानि देलु जे टेंसेस रो ना गुडी को कोन दैट इज वेरी इंपोर्टेंट आपन जानिबा बहुत बहुत दरकार किंतु किंतु नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कम्स आपन जानि सारिला परे कोन सबु जाको 12टा टेंसेस आपन को पूरा प्रकृत करियर अछि पूरा पानी करियर अछि कि नॉट लाइक दैट किछिटा टेंस आपन को बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि आपन को जानिया बहुत दरकार ता छडा अन्य टेंस को एते एते भीतर को जाई कि प्रैक्टिस न कले भी इट्स ओके काई ना किछिटा टेंसेस हमर अछि जोटा कि एग्जाम पैटर्न पे पड़े जेहेतु हमर टारगेट रहला कि हमर स्पीकिंग टा भलो हो स्पोकन इंग्लिश टा भलो हो सेति पई को टेंस हम पे बहुत इंपोर्टेंट सेटा आपन जानि रखंतु ओके देखंतु हमर प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत इंपोर्टेंट ओके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जोटा कि हमें यूज करछु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एते इंपोर्टेंट हो पास्ट सिंपल टेंस बहुत दरकार पास्ट कंटीन्यूअस ओके ओके हमर सिंपल फ्यूचर टेंस फ्यूचर रे हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करू बाकी उडे को हमर एग्जाम पैटर्न पे मेनली हम यूज करू अदरवाइज हम जनरल स्पीकिंग रे हमर एतेटा तार यूसेजेस न थाए तेणु आपण जदि आपण स्पीकिंग टा को बहुत भलो करिया को चाहउचंती तबे एक तक 1 2 3 4 5 पांचटी टेंस आपण भलो करी करबे लेट मी नेम इट फर्स्ट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट सिंपल टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एइथरे आपण जदि परफेक्टली प्रैक्टिस करूचंदी ना आपनकर बुझिबार प्रॉब्लम होबनी कि कहइबार प्रॉब्लम you would start speaking confidently and fluently and you would not have any doubt अपन जानिया पई एतक टेंस जानंतु किंतु प्रैक्टिस एई पांचटा पर्टिकुलरली करंतु जहा द्वारा अपन स्पीकिंग रे कोनसे केबे कंफ्यूजन होबनी जत्ते की प्रैक्टिस करि परिबे सेत्ते की अपन होल्ड स्ट्रांग हो okay so etiki re amar tenses close hela so let's do some translation so that you understand how should we actually identify these tenses and how are these tenses used in our day to day conversation so let's go to the translation part okay so let me erase it okay amara kichita amara sentences practice kariba jaha dwara apun jani paribe ei tenses udi ka application kemti rahuchi okay so let's start first amara achi example sentence mu setebele खाउथली से आसिला मु सेतेबेले खाउथली से आसिला मु सेतेबेले खाउथली से आसिला राइट सो एटा रे हमरा को टेंसेस यूज होबो ओके देखो I was eating then when he came
when he came, right? I was eating then when he came. ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛେ then, right? when he came ସେ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଆମର past simple tense ଆଉ ଏଇଟା ଆମର past continuous tense, right? ଦିଟା tense ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର କି ଏଇଟା ମୁଁ past simple tense ୟୁଜ କଲି ଆଉ ଏଇଟା past continuous tense ୟୁଜ କଲି। ଏଇଟା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି କି? କିଛି ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆକ୍ସନଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଚାଲୁଥିଲା, right? I was eating then when he came. Okay, clear? Next, number 2. Okay, ମୁଁ ଆଗରୁ କାମଟି ସାରି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ କାମଟି ସାରି ଦେଇଥିଲି। ସାରି ଦେଇଥିଲି, right? I had already done that work. କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପୁରୁଣା କଥାଟେ କହୁଛୁ ଯୋଉଟା ଆମର ହେଇ ସାରିଛି। I had already done that work. ଏଇଟା ଆମର କୋଉ ଟେନ୍ସ ଲାଗିଲା? past perfect tense ଲାଗିଲା। past perfect tense ଲାଗିଲା, ଏଇଟା past perfect tense, right? କାହିଁକି ନା ଏଇ କାମଟା ଆମର ଅତୀତରେ ହେଇ ସାରିଛି, right? ଅତୀତରେ ହେଇ ସାରିଛି। I had already done that work. Okay, clear? এটা past perfect tense. Okay, now number 3. ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଦୌଡ଼େ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଦୌଡ଼େ, ତା ମାନେ ଏଇ ଆକ୍ସନଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ସେ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଟେନ୍ସ। I run every day. I run every day. Or I go for running every day. Okay, anything we use present simple tense. Present simple tense. Number 4. ସେମାନେ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କୋଉ ଟେନ୍ସ ହେଲା? ସେମାନେ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଟେନ୍ସଟା ମାନେ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି at the time of speaking. They are playing outside. Okay, ଏଇଟା କୋଉ ଟେନ୍ସ ହେଲା ଆମର? Present continuous tense, right? Present continuous tense. They are playing outside. Okay, they are playing outside. तापरे से माने 2 घंटा धरी पढुचंती, से 2 घंटा धरी पढुची, से 2 घंटा धरी पढुची, ता माने से पास्ट रु पढुची, 2 घंटा हलानी आगरु पढा आरंभ करची, एबे भी पढुची, ताले एटा को टेंस हबो? हमरो हबो he has been studying for 2 hours now. For 2 hours now. He has been studying for 2 hours now. एथे हमरो रहिला present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, right? एबे जानि परछन्ती जे हमर टेंसेस रे ना जानिबा केते दरकार। Present perfect continuous tense. He has been studying for 2 hours now, right? Okay, now एबे next होची से, all right, आमे सेठाकू जाउथिलु, आमे सेठाकू जाउथिलु, आमे सेठाकू जाउथिलु माने आमे सेठकी जाउथिलु, हमर जीवाटा कंटीन्यूअस ला, किंतु एटा जेहेतु पास्ट अछि हम कोड टेंस यूज करछे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। We were going there. We were going there, right? We were going there, right? एटा हला हमर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, राइट? तापरे से गतकाली स्कूल जाई नथिला, से गतकाली स्कूल जाई नथिला, एटा हमर पास्ट रहिला, और पास्ट विषय रे एक्चुअली सॉरी सरला, से जाई नथिला, सेटा सरला, कामडा सरला। सो he did not go to school yesterday. All right, एटा कोन टेंस हला? पास्ट सिंपल टेंस हला, पास्ट सिंपल टेंस हला, राइट? तापरे मु भात खाई सारची, I have eaten rice. I have eaten rice. ताले एटा कोन हला? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हला, प्रेजेंट परफेक्ट, जोटा हमरा घटनाटा हेची पास्ट रे, किंतु प्रेजेंट सहित हमर कनेक्शन अछि। I have eaten rice. ओके, तापरे मु तुमको फोन करूथिली, मु तुमको फोन करूथिली, I was calling you, I was calling you.
I was calling you. एटा कौन है मु करथली past continuous tense है. Last one आमे काली सेठाकू जिबु. We will go there tomorrow. एटा कौन है हमरो हैला future simple tense, simple future tense, right? Simple future tense. अपन जानिए इस पर्टिकुलरली हमर जति कि 10 टी जो एग्जांपल नेली अपन जानि पाले जे हमर ना गुडी को कोन टेंसेस गुडी को कोन को भली भाबरे हम सेंटेंसेस बनौ छे ठीक से भली आपण भी सेतिकिटा स्टेप्स नियंतु आ प्रत्येक सेंटेंसेस गुडा को करूचंदी तार टेंस गुडी को आइडेंटिफाई करिया को चेष्टा करू एटा हुए तो लाइक यू नो बहुत सिंपल जिस जना पड़ी पारे किंतु इट हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इट हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ एटा एते एते इंपोर्टेंट जहां आपण केबे मिस करि परिबेनी आपण जदी मिस करूचंदी तबे सब बेले भूल करिवे तो ए जिंस पति आपण केयरफुल रहंतु आउ आपण सब सेंटेंसेस गुडी को करेक्टली कहंतु if you really made up your mind that you want to speak English fluently, then this is the most important part of grammar which you cannot miss. So make up your mind, be confident, start and practice today. And जो भी आपनकर लक्ष्य अछि आपन तक पांतो आउ सब डाउट क्लियर करी आगो को बढ़ंतु जेतक पारियो प्रैक्टिस करी कि स्पीकिंग करंतु and so that you speak confidently and fluently. Until then, keep learning English and speak confidently. Jai Janam.